Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Nutanix School, and in this video we are going to see a famous problem from interviews. Okay, Amazon के interviews में और भी companies के interviews में पूछी गई है, and that is house robber. Okay, so कैसे हम ये problem को most optimized solution तक लेके जाते हैं, we will see that. But before that, let's just see what is Nutanix School. So basically, as we all know that Nutanix School is an e-learning platform which have different programs especially designed for you. The first program they have for you is pay after placement program. Okay, so under this what they do is they will teach you for 6 months, they will make you a full stack developer, and not only this, after that they will also get you placed in these different companies. Okay, most amazing thing about this program is that they will also that you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies. Okay, like and for minimum of 5 lakh CTC. So most amazing thing about this program is that you will also get placed after your full stack development course. If you want to apply for this course, you can just come to nutanixschool.co and apply now. Okay, and this is it. Second program they have for you is Launchpad Initiative. So if you want to start learning for free, you can just come to their website, log in or sign up and start learning. You can opt different courses from here. Okay, and they have different courses especially designed by educators for you, and you can opt these courses, complete these courses, and you will also get certificate after completion of these courses via Nutanix School. Okay, and at the end, if you haven't subscribed this YouTube channel, just go to YouTube, subscribe this YouTube channel where we are posting videos every day, and we have different playlists for you which are regularly getting updated so that you can get free content and good content. Okay, like for companies placement, for problem sets of online assessment and interviews, for Git, for C++, for DSA, for dynamic programming, we have content for everything. Just go to YouTube and subscribe this YouTube channel. Now let's just begin our today's video, and that is house robber. Okay, so let's just see problem statement first. You are a professional robber planning to rob houses along a street. Each house has a certain amount of money stashed. The only constraint stopping you from robbing each of them is that adjacent houses have security systems connected, and it will actually contact the police if 2 adjacent houses were broken into the same night. Given an integer array nums representing the amount of money of each house, return the maximum amount of money you can rob tonight without alerting the police. Okay, so I hope कि इतने से question समझ में आ गया होगा. Question is easy. Okay, so basically what the question is saying is that you have a complete num array. Okay, and you have to pick elements from this num array such that you are not picking any 2 adjacent elements. Okay, like अगर तुमने 1 पिक किया तो 1 के बाद का तुम ये adjacent 2 पिक नहीं कर सकते, and if you have picked 2, you cannot pick this one and this 3. It is obvious because 1 and 3 are both adjacent to this 2. Okay, so you have to pick some elements from this array in a way such that sum of picked elements is maximized. Okay, तो तुम्हें इस वे में कुछ एलिमेंट्स पिक करने हैं, एंड यू कैन पिक एलिमेंट्स, यू कैन ओनली पिक नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन और दिस इज द कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. नाउ हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम? सो फर्स्टली आई हैव ऑलरेडी टीच यू कंप्लीट डीपी सीरीज. ओके, मैंने कितनी सारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट 30 वीडियोज हैं, 35 वीडियोज हैं उस प्लेलिस्ट में. तो सबसे पहले प्रॉब्लम की अप्रोच कैसे जाननी है हमें. क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है दैट वी हैव चॉइसेस ओवर पिकिंग एलिमेंट्स. वी हैव चॉइसेस ओवर पिकिंग एलिमेंट्स. ओके, एंड वी कैन पिक सम एलिमेंट और वी कैन नॉट पिक सम एलिमेंट. ओके, वी हैव चॉइसेस ओवर पिकिंग एलिमेंट ओवर ईच एलिमेंट. ओके, एंड सेकेंड थिंग, वी हैव टू मैक्सिमाइज द सम ऑफ एलिमेंट्स दोज आर पिक्ड. ओके, हमें सारे एलिमेंट्स जितने भी हमने पिक किए हैं उस एलिमेंट के सम को मैक्सिमाइज करना है. तो 2 चीज से तुम्हें इतना समझ में तो आ गया होगा दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस यूजिंग डीपी. ओके, और डीपी इसकी पेरेंट प्रॉब्लम भी तुम्हें काइंड ऑफ समझ में आ जानी चाहिए दैट इन ईच एलिमेंट वी आर गोइंग टू डिसाइड वेदर वी आर गोइंग टू पिक दिस एलिमेंट और वेदर वी आर नॉट गोइंग टू पिक दिस एलिमेंट. ओके, एंड वी आर पिकिंग दोज एलिमेंट्स ओनली सच दैट आवर सम गॉट मैक्सिमाइज्ड. एंड इसलिए ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये नैपसैक का वेरिएशन है विथ सम एक्स्ट्रा कंडीशंस. ठीक है, तो इस तरह से तुम इसका डीपी और डीपी में भी नैपसैक का वेरिएशन तुम कह सकते हो. ठीक है, अब अगर मैं ये वाला एग्जांपल दिखाऊं तुम लोगों को, ठीक है, ये वाला एग्जांपल, सपोज वी हैव दिस नम्स एरे और नम्स एरे में 1 2 3 1 एलिमेंट है. ठीक है, रॉब हाउस 1 एंड देन रॉब हाउस 3.
दिस एंड दिस एलिमेंट अगर तुम ड्रॉप कर रहे हो तो टोटल सम कितना आएगा 4. तो दिस इज योर आंसर. मैक्सिमम सम यू कैन गेट बाय पिकिंग द नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स विल बी 4. ओके, इन सेकेंड केस तुम क्या पिक कर सकते थे, 2 और 1. ओके, उसका सम कितना होता है 3 एंड दैट इज ऑब्वियसली लेस देन 4. दैट्स व्हाई यू आर पिकिंग फर्स्ट एंड थर्ड हाउस, और फर्स्ट यू आर रॉबिंग फर्स्ट एंड थर्ड हाउस. ओके, नाउ अब हम डीपी की इसकी अप्रोच बिल्ड कैसे करने वाले हैं. तो उसकी अप्रोच बिल्ड करने के लिए लेट्स जस्ट सी व्हाट आर कंडीशन डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, एट ईच एलिमेंट, सपोज वी आर एट ith एलिमेंट एंड लेट्स जस्ट से दैट दिस इज अवर करंट एलिमेंट. ओके, हम यहाँ पे हैं. वी आर गोइंग टू डिसाइड वेदर वी आर गोइंग टू पिक दिस एलिमेंट और वी आर नॉट गोइंग टू पिक दिस एलिमेंट. ठीक है, हमारे पास दो केसेस हैं. सपोज हमने इस एलिमेंट को पिक कर लिया और सपोज हमने इस एलिमेंट को नॉट पिक किया. ठीक है, अगर हमने इस एलिमेंट को पिक कर लिया देन द केस इज, अगर हम सपोज ये थर्ड एलिमेंट था. ठीक है, अगर हमने थर्ड एलिमेंट को पिक कर लिया तो ऑब्वियसली हम सेकेंड एलिमेंट को पिक नहीं करने वाले. ठीक है, बिकॉज वी कांट पिक सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम, अगर हमने थर्ड एलिमेंट पिक किया और अगर हमने ith एलिमेंट करंट एलिमेंट पिक किया तो हम i-1th एलिमेंट को पिक नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहां पे मैं अगर लिख दूं वी कैन नॉट पिक i-1th एलिमेंट इफ वी हैव पिक्ड ith एलिमेंट. ठीक है, इफ सपोज मैंने ith एलिमेंट को नॉट पिक किया, ठीक है, मैंने ith एलिमेंट को पिक नहीं किया, देन देयर कैन बी टू केसेस. हम i-1th एलिमेंट को पिक भी कर सकते हैं और हम i-1th एलिमेंट को पिक नहीं भी कर सकते हैं. ठीक है, हम i-1th एलिमेंट को, मेरी दो कंडीशन बनेंगी दैट वी कैन पिक i-1 एलिमेंट और वी कैन नॉट पिक i-1 एलिमेंट. बट द केस इज वी आर मैक्सिमाइजिंग द सम ऑफ टोटल पिक्ड एलिमेंट्स. ओके, हम टोटल पिक्ड एलिमेंट्स का सम मैक्सिमाइज कर रहे हैं एंड सिंस हम ith एलिमेंट पिक नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू पिक i-1th एलिमेंट. वाई, हमारे पास चॉइसेस हैं कि हम i-1 एलिमेंट पिक करें या ना करें, बट टू मैक्सिमाइज द सम ऑफ टोटल पिक्ड एलिमेंट्स वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू पिक i-1 एलिमेंट. ओके, एंड दिस इज द थिंग, मेन की चीज ये थी. तो सेकेंड जो केस है हमारा दैट इज नॉट पिकिंग द करंट एलिमेंट, इन दैट केस we can only consider this case when we are picking i-1 element. okay, and ये केस हम पिक कर सकते हैं, ये केस को हम ड्रॉप कर सकते हैं. why? because this case is not useful because we are obviously going to pick i-1th element. okay, now we have total two cases. condition diagram में हमारे पास two cases हैं and those cases are we are going to pick ith element and we are not going to pick ith element and we have to give the sum of maximum sum of picked elements. okay, so obviously we are going to take maximum of both these two cases, that we either we are going to pick current element or we are not going to pick current element. okay, maximum of both these two cases. fine, now अब मुझे सिंपली ith करंट एलिमेंट को अगर अपडेट करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा. अगर मैं बोलूं कि मुझे अब ये सारे एलिमेंट्स के लिए कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ये रिजल्ट, है ना, तो व्हाट आई विल सिंपली डू, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ith की i की वैल्यू कितनी हो सकती है, टोटल 1 2 3 4 अप टू n एलिमेंट्स हैं तो n. ठीक है, तो मैं एक डीपी एरे बना लूं, dp ऑफ n. ठीक है, इस डीपी एरे में मैं ith स्टेज पे, अगर ये मेरा ith एलिमेंट है, मैं क्या dp ऑफ i में क्या स्टोर करूंगा, dp ऑफ i विल स्टोर मैक्सिमम सम टिल नाउ आई गेट. ठीक है, 0 से लेके i एलिमेंट्स तक कंसीडर करने के बाद जो मुझे मैक्सिमम सम मिला है बाय पिकिंग नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स. ठीक है, एंड एट द एंड dp ऑफ n मुझे क्या दे देगी, dp ऑफ n विल सिंपली गिव मी मैक्सिमम सम बाय कंसीडरिंग कंप्लीट एरे और टोटल n एलिमेंट्स एंड उन एलिमेंट से मैंने नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स पिक कर लिए. ठीक है, सो दिस विल गिव मी द कंप्लीट सम. फाइन, नाउ अब मुझे सिंपली क्या करना है, अब मुझे dp ऑफ i को अपडेट करना सीखना है एंड दैट विल आई एम शोइंग यू फ्रॉम द कोड. ठीक है, मैं वो कोड से दिखाता हूं. तो लेट्स जस्ट गो टू न्यूटन स्कूल ID. दिस इज न्यूटन स्कूल ID वेयर यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस कोडिंग पार्ट ऑफ योर कोड्स और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एनीथिंग. ठीक है, यहाँ पे सैंपल इनपुट और आउटपुट का भी प्रोसेस है, तो जस्ट यू कैन गिव कस्टम इनपुट एंड गेट द कस्टम आउटपुट. नाउ लेट्स जस्ट सी दिस फंक्शन दैट इज रॉ फंक्शन, जिसमें आपको एक नम्स एरे गिवन है. मैंने एक डीपी एरे बना ली जिसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से. नाउ दीज आर सम बेस केसेस ऑफ योर रिकर्जन यू कैन से. ठीक है, अगर nums डॉट साइज 0 है, it is obvious we are not going to pick anything and we will simply return 0. second thing is when nums dot size is 1, okay, in that case we have only one choice, that we are, if we have to maximize the sum of picked element, obviously we are going to this
pick this element, ठीक है, and that's why we will return nums of not. Now we have two elements in the num array. Okay, we have two elements, so obviously either we can pick first element or we can pick second element. So we will give max of both these two elements, ठीक है. आफ्टर दैट मैं मेमोइजेशन करूंगा अगर अपने आंसर में, ठीक है, जैसे रिकर्जन से मेमोइजेशन करते थे. तो आई हैव ऑलरेडी मेड दिस डीपी वेक्टर जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया था. अब मैं डीपी नॉट का आंसर और डीपी 1 का आंसर इसमें इनिशियल स्टोर कर लेता हूं, ठीक है, एंड 2 से स्टेट अपडेट करना शुरू करता हूं. एंड डीपी ऑफ आई विल बी ऑब्वियसली अपडेटेड एज मैक्स ऑफ डीपी ऑफ i-2 प्लस नम्स ऑफ i एंड डीपी ऑफ i-1. वाई? मेरे पास दो केसेस थे, तो मैं यहाँ पे दो वैल्यूज दिख रही होंगी. फर्स्ट वैल्यू इज व्हेन आई एम गोइंग टू पिक करंट एलिमेंट दैट इज नम्स ऑफ i. जब मैं नम्स ऑफ i पिक कर रहा हूं तो ऑब्वियसली इट विल गेट एडेड इन द सम प्लस dp of i-2. Why? Because I cannot use i-1th element. In that case I will use dp of i-2, that is sum till I have used i-2 elements from the starting or from the left of the array, ठीक है. Second case is when I am not picking current element, and in that case जो मेरा i-1 एलिमेंट तक का सम था, मैक्सिमम सम, वही मेरा i एलिमेंट्स तक का सम हो जाएगा. सिंपल सा है, ठीक है. एंड एट द एंड आई एम गोइंग टू रिटर्न dp of n और dp of back, ठीक है, लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द array. When I have processed complete array and I have picked elements and I have got my maximum sum of picked elements after picking non-adjacent elements, ठीक है. तो ये मेरा कुछ क्वेश्चन था. अब मैंने बोला था कि हम वी आर गोइंग टू गिव मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, ठीक है. सो इंटरव्यूअर विल आस्क यू फॉर मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन. एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे बात करते हैं. सिंस हर एक एलिमेंट को एटलीस्ट वन टाइम हमें चेक करना ही पड़ेगा दैट ईदर वी आर गोइंग टू पिक दैट एलिमेंट और नॉट. ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम, करंट प्रोग्राम, इज O of n. ओके, एंड वी कैन नॉट रिड्यूस दिस बिकॉज एटलीस्ट एक बार तो हर एलिमेंट में जाना ही पड़ेगा. दैट इज minimum time complexity or most optimized time complexity of this program will be O of n. Second thing we can check is space complexity of this program, and we can optimize in terms of space complexity. Now I'm telling you how. I hope आपने फिबोनाची सीरीज ऑलरेडी पढ़ चुकी हो, एंड फिबोनाची सीरीज में अगर आपने देखा होगा तो मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हम कैसे देते थे. सिंस फिबो ऑफ आई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता था, उसका जस्ट प्रीवियस टू एलिमेंट्स. ओके, तो हम क्या करते थे, पूरी एरे बनाने की जगह हम लास्ट टू एलिमेंट्स स्टोर करके रखते थे, ठीक है. सेम थिंग वी आर डूइंग इन दिस ऑल्सो. सी फॉर अपडेटिंग करंट स्टेट दैट इज डीपी ऑफ आई, वी नीड ओनली डीपी ऑफ i-2 एंड डीपी ऑफ i-1 एट एवरी स्टेप. सपोज मैं 10th एलिमेंट अपडेट कर रहा हूं तो मुझे 9th और 8th की इंफॉर्मेशन चाहिए. मैं 12th एलिमेंट अपडेट कर रहा हूं तो मुझे 11th और 10th की इंफॉर्मेशन चाहिए. ओके, इन दिस वे यू कैन, अभी तक आप लोगों को इंट्यूशन लग गया होगा दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंप्लीट डीपी एरे वी कैन यूज जस्ट टू वेरिएबल्स, दैट इज वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2. ओके, अगर मैं यहां पे लिखूं दैट वी कैन मेक अ वेरिएबल फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके, फर्स्ट में मैं क्या स्टोर कर लूं, अगर डीपी ऑफ i-1, ठीक है, और सेकेंड में अगर मैं स्टोर कर लूं डीपी ऑफ i-1 एंड सेकेंड एज dp of i. तो इन नेक्स्ट स्टेप जब मैं dp of i+1 अपडेट कर रहा हूँ तो मुझे मेरे पास प्रीवियस टू वैल्यूज होंगी. इन दिस वे वी कैन ऑप्टिमाइज दिस प्रॉब्लम. एंड अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, सिंपली O of 1. Okay, so in this way you can do this house robber question in O of n time complexity and O of 1 space complexity. So thank you guys for watching this video. If you still have any doubt, you can ask me in comment section. Okay, if you haven't checked Nutanix School pay after placement program yet or Nutanix School launchpad initiative, just go to their website, check their check their pay after placement program, and if you want to enroll for that, just you can see that banner here also, and you can apply now just coming to their website. And for launchpad initiative, just go log in or sign up and start learning by opting any of the courses and get the most out of it. At the end, if you haven't subscribed this YouTube channel, just go and subscribe this YouTube channel so that you can get benefit of regularly updating these playlists. Okay, thank you guys for watching this video.